गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मई जून 2017 वेरिएंस 22. Choose from the following chlorides to answer the question. Each chloride can be used once, more than once, or not at all. Which chloride is a colored solid? Colored solid जो है वो transition element का होगा. इसका मतलब copper 2 chloride. ठीक है बेटा. उसके बाद है आपके पास reacts with warm aqueous sodium hydroxide to produce a gas that turns damp red litmus paper blue. That means कि ammonia gas is given. So when any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off. So this is your ammonium salt. Ammonium chloride is the right answer. उसके बाद है आपके पास reacts with water to form a strong acid. तो हाइड्रोजन क्लोराइड है आपके पास. अगर मैं इसको ऐड करूंगा वाटर में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेगा. Then contains a cation with a charge of +1. तो +1 चार्ज जो है वो किसके ऊपर होता है? अमोनियम आयंस के ऊपर होता है. ठीक है. और या अमोनियम आयंस के ऊपर होता है चार्ज +1. तो आप लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड. उसके बाद है हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू मीथेन. मीथेन एक मॉलिक्यूल है. तो जैसे CH4 है ऐसे CCl4 भी है, which is carbon tetrafluoride. So आप लिखेंगे कार्बन टेट्रा chloride. Next is the table shows some information about the 6 particles. Complete the table. Okay. सबसे पहला है क्लोरीन 35. इसका प्रोटॉन नंबर 17. इसमें न्यूट्रॉन 18. इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, क्योंकि जब प्रोटॉन नंबर 17 होता है तो ऑब्वियसली बेटा 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. अगर आपके पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 20 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास क्लोरीन 37. ये इसका आइसोटोप हो गया. अगर आप कह रहे हैं पोटेशियम +39, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 19 है. तो न्यूट्रॉन्स 39 - 19 कितने हो जाएंगे? 20 और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ब्रोमाइड 79. एटॉमिक नंबर कितना होता है ब्रोमीन का? 35. सही है. ब्रोमीन 81. एटॉमिक नंबर 35 है. तो मास कितना हो जाएगा आपके पास? 46. ठीक है. इसके बाद है आपके पास एटॉमिक नंबर 37. 37 एटॉमिक नंबर रुबिडियम का होता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रोटॉन 37 है तो इलेक्ट्रॉन भी 37 होने चाहिए. तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 36. इसका मतलब रुबिडियम के ऊपर चार्ज कितना है? प्लस. और जाहिर सी बात है इन तमाम जगहों पे एग्जामिनर ने एटॉमिक मासेस लिखे हैं, तो रुबिडियम के लिए भी आप एटॉमिक मास लिखोगे. तो रुबिडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 85. कैसे पता चला 85 है? या तो आप पीरियोडिक टेबल से देख के लिख लो या इन दोनों को ऐड करके लिख दो. एक ही बात है. सही है. ज्यादा बेहतर क्या है कि इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए. व्हाट इज मीन बाय द टर्म आइसोटोप? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and electrons but different number of neutrons. Identify 2 atoms which are isotopes of same element.
बेटा एक तो आपके पास क्लोरीन है और दूसरा आपके पास ब्रोमीन है, तो आप क्लोरीन भी कह सकते हो, ब्रोमीन भी कह सकते हो। तो एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37, ये सबसे आसान है। हमने वैसे क्लोरीन ब्रोमीन 79 ब्रोमीन 81 भी कराया, आप वो भी जवाब दे सकते थे, एक्सेप्टेबल होता वो भी। उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय insoluble base. Magnesium chloride is soluble salt that can be prepared from an insoluble base. Name the acid and an insoluble base that can be used to make magnesium chloride. तो बेटा insoluble base आपके पास हो जाएगा magnesium oxide, ठीक है, और आप उसको रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो नाम पूछ रहा है बेटा वो आपसे, magnesium oxide and hydrochloric acid. Describe the experimental method used to prepare probe crystals of magnesium chloride from this acid and base. तो बेटा आप यूज करेंगे, use excess amount of magnesium oxide, ठीक है, add magnesium oxide in a warm solution of hydrochloric acid. Filter the mixture to get the filtrate. Transfer the filtrate in an evaporating basin for evaporation and crystallization. Dry the crystals on filter paper. On filter paper or through heating. हीटिंग इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो स्टेबल टू हीट होता है, डिकम्पोज नहीं होता। aqueous barium chloride and aqueous potassium sulfate can be used to prepare barium sulfate in a precipitation reaction. Write ionic equation including state symbols for this reaction. So सबसे पहली तो बात ये कि आपको उसकी इक्वेशन आनी चाहिए बनानी। ये है आपके पास बेरियम क्लोराइड और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो पोटेशियम सल्फेट से। तो ये कवर हो जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड में, सही है। आप जानते हैं कि पोटेशियम और सल्फेट जो हैं, सॉरी पोटेशियम और क्लोराइड्स जो हैं वो स्पेक्टेटर आयंस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट्स लेफ्ट ना, बेरियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस।
एरोबेरियम सल्फेट, तो ये क्या होगा आपके पास एक्वस, ये भी क्या होगा आपके पास एक्वस, और ये क्या होगा आपके पास सॉलिड। ठीक है बेटे। इसके बाद है आपके पास potassium sulfate can be prepared by reacting aqueous potassium hydroxide with dilute sulfuric acid. In an experiment, 20 cm cube of 0.65 mole per dm cube sulfuric acid is neutralized by aqueous potassium hydroxide. Calculate the maximum mass of potassium sulfate that could be prepared. Okay. Easy है। मुझे एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो 1000 cm cube of H2SO4 contain 0.65 moles. और अगर आपके पास 20 cm क्यूब है, बताइए क्या होगा। 0.013 मोल्स। ठीक है। उसके बाद है आपके पास H2SO4 और K2SO4 में रेशियो 1:1 का है। इसका मतलब जो मोल्स आपने 0.013 H2SO4 के लिए लिए हैं, वही मोल्स ऑफ K2SO4 हो जाएंगे। K2SO4 का मास 174 दिया हुआ है, MR, तो मास आ जाएगा मास ऑफ K2SO4 मोल्स है आपके पास 0.013 इंटू MR, MR है मेरे पास 174, तो बेटा मास बताइए कितना आ रहा है। हाँ 2.262 ग्राम। ठीक है। आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन 1.72 gram of dry potassium sulfate was obtained. Calculate the percentage yield of potassium sulfate. Okay. तो बेटा परसेंटेज यील्ड के लिए आप क्या करेंगे, ये है 1.72 डिवाइडेड बाय 2.262 इंटू 100। बताइए आंसर क्या आ रहा है। 76.038%। ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिकल यील्ड थी, ये आपकी थ्योरेटिकल यील्ड थी, दोनों को डिवाइड किया इंटू 100 कर दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, see the electronic configuration of each of the ions in the sodium oxide. सोडियम आयन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। ऑक्साइड आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8। सही है। When molten sodium oxide is electrolyzed, sodium and oxygen are formed. Construct an equation for the two electrode reaction. Reaction at negative electrode. Negative electrode का मतलब कैथोड, और कैथोड पे सोडियम अवेलेबल होगा क्योंकि वाटर तो है नहीं। सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन सोडियम में। तो मोल्टन सोडियम के लिए मैं लिक्विड लिखूंगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड, एनोड पे क्या होगा, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम में, +2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। तो मैं यहाँ 2 लगाऊंगा, मैं यहाँ भी 2 लगाऊंगा, तो अगर 1 मोल से 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे, तो फिर 2 मोल से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे, 4। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 4। मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 4। मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 4। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिक्विड, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, गैस। सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करके ना लिखूं, एज इट इज लिख दूं जैसे आपने पहले लिखा था, तो क्या मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? तो क्या मुझे मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा। Explain how molten sodium oxide conducts electricity. Molten sodium oxide contains 3 mobile ions.
due to the presence of free mobile ions. Sodium oxide reacts with water to give sodium hydroxide. Construct an equation for this. We have done this equation in periodic table का chapter. आप जानते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में प्लेस किया जाता है, इट विल टर्न टू सोडियम हाइड्रोक्साइड. मैंने कहा था एक इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको. सही है. Question number 5. Ethanoic acid and butanoic acid are both carboxylic acid. Name a reagent that can be used to make ethanoic acid from ethanol. Ethanol से ethanoic acid बनाने के लिए I need KMnO4 in acidic medium. Dilute ethanoic acid reacts with all carbonates and with some metals. Name one method that will react with dilute ethanoic acid and name the product of this reaction. भाई सोडियम मेटल कर लीजिए, ये तो हमने पढ़ा है, आपके रजिस्टर में लिखा है. ठीक है. और प्रोडक्ट क्या बनेगी? सोडियम एथेनोइड बनेगा. और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी. प्रोडक्ट्स कह रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस होगी. Construct an equation to show the reaction of ethanoic acid with calcium carbonate. ये इथेनोइक एसिड है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहे हैं. वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड ऑब्वियसली कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा व्हिच इज कैल्शियम इथेनोइड. ये हो जाएगा कैल्शियम इथेनोइड. क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 मोल्स अप्लाई किए हैं, इसलिए बेटा मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. ठीक है. Draw the structure of a carboxylic acid that is an isomer of butanoic acid. Show all the atoms and all the bonds. बेटा आपके पास butanoic acid है, पहले तो butanoic acid लिख लो. 1 2 3 4. ये butanoic acid हो गया. अब इसका आइसोमर बनाना है आपने. तो आइसोमर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? एक ब्रांच, अल्काइल ब्रांच अटैच कर दूंगा. Isn't it? क्या ख्याल है? ये बन जाएगा. आप चेक करो, इस कार्बन के ऊपर मैंने एक अल्काइल ब्रांच लगा दी, इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H. कोई इशू तो नहीं है. दिस वन इज द मोस्ट इजीएस्ट वन. इसके अलावा और कोई ऑप्शन था भी नहीं हमारे पास. ठीक है. जब हाइड्रोकार्बन चेन होती है तो चेन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है. ये बोली थी मैंने बात लेक्चर देते वक्त. तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चेन थी, इसलिए एक चेन आइसोमर बना दिया मैंने अल्काइल ब्रांच लगा के. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड is both an alcohol and a carboxylic acid. देखो अल्कोहल इसलिए क्योंकि OH का ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए क्योंकि COOH ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है. वो कह रहे हैं lactic acid is a monomer that can be polymerized to form a polyester. What type of polymerization occurred during this reaction? Condensation obviously, क्योंकि डबल बॉन्ड तो है नहीं between the carbon atom. तो कंडेंसेशन रिएक्शन ही होगा ना, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन कर लेंगे. This polyester is biodegradable. Suggest an advantage of a polymer being biodegradable. तो आप लिखेंगे can easily hydrolyze, so can easily decompose. They can easily decompose or hydrolyze. Respiration is a reaction that takes place in living cells to release energy. The overall reaction involves the oxidation of glucose. The reaction is exothermic and catalyzed by enzyme. Draw an energy profile diagram for the respiration using the axis shown. Axis show करने enthalpy change reactants products. तो बेटा आप जानते हैं y axis पे हमेशा क्या होता है? एनर्जी होती है और x axis के ऊपर क्या होता है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होता है. क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
इसलिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम होगा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। C6H12O6 प्लस 6O2, यहां पर आ जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, और ये इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, एंथैल्पी चेंज कह रहे हैं डिटरमिन करने के लिए, तो एंथैल्पी चेंज बेटा ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर एंथैल्पी चेंज। तीन चीजें मांगी थी इन्होंने, हमने बता दी। बताना जरूरी है बेटा क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव ना। Explain how a catalyst such as enzyme can speed up the chemical reaction. So enzyme lowers the activation energy and it provides a different pathway for the reaction. Also आप ये भी लिख सकते हैं कि more particles have energy equal to or greater than activation energy. ठीक है, respiration, combustion and photosynthesis are important processes in all carbon cycles. Describe how a carbon cycle regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. तो आप जानते हैं कि combustion और respiration से carbon dioxide गैस रिलीज होती है। Combustion and respiration produces carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है, to counter the increase amount of carbon dioxide, photosynthesis uses this carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है, thus these processes maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. ठीक है,
Thus, these processes maintain the balance of carbon dioxide in the atmosphere. Aqueous sulfuric acid. Copper reacts with hot concentrated aqueous sulfuric acid. Suggest what you would observe when copper reacts with hot concentrated aqueous sulfuric acid. Obviously बेटा जब ऑब्जर्व करूंगा तो पहली तो चीज ये होगी जो पिंक ब्राउन सॉलिड है वो डिसॉल्व हो जाएगा, या पिंक ब्राउन सॉलिड डिसअपियर, यानी कॉपर डिसअपियर हो जाएगा. पंजेंट स्मेल रिलीज होगी, पंजेंट गैस इज गिवन ऑफ. इसके अलावा कॉपर सल्फेट एक्वस बना है तो ब्लू सॉल्यूशन फॉर्म हुआ होगा. Name the salt of formula CuSO4, copper 2 sulfate. बेटा वो कर रहा है concentrated. सही है. Copper is oxidized when it reacts with concentrated sulfuric acid. Use the equation to explain that copper has been oxidized. तो बेटा आप नोट करें यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, जबकि यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2+. तो इसका मतलब कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करके इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा है, राइट. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द रिएक्शन copper is oxidized because it loses electron, so it changes its oxidation state from 0 to +2. उसके बाद है in excess of copper is added to 25 cm³ of hot 14 mole per dm³ H2SO4. Okay, make sure बहुत ध्यान से बात सुने. Use this information together with the equation to calculate the maximum volume of sulfur dioxide formed. The gas volume is measured at room temperature and pressure. Okay, बेटा सबसे पहले मैं moles of H2SO4 निकालूंगा, एक मिनट. And for that 1000 cm³ में 14.0 moles हैं H2SO4 के. तो अगर आपके पास 25 cm³ है तो बताइए कितने मोल्स होंगे. 0. Moles of H2SO4 is 0.35. ओके, इक्वेशन की तरफ चलते हैं. H2SO4 2 मोल है, सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल है. H2SO4 2 मोल है, सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल है. अगर ये 0.35 है तो बताइए मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने होंगे. 0.175 मोल्स. ठीक है. वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई 24 dm³ वॉल्यूम एट RTP. तो अगर 0.175 मोल्स हैं तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा. हाँ, 4.2 dm³. तो आप यहाँ लिख दीजिए 4.2 dm³. अच्छा 4.2 dm³ है, लेकिन मैं आंसर क्या लिखूंगा,
4200 cm क्यूब। क्यों? इसलिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी एग्जामिनर ने cm क्यूब वॉल्यूम यूज किया हुआ था, इसलिए आंसर भी किस में जाएगा? cm क्यूब में जाएगा। सही है, ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। हाँ नहीं ना बेटा, वॉल्यूम cm क्यूब में दिया हुआ है ना, तो आपने उसको dm क्यूब को cm क्यूब में कन्वर्ट कर लिया ना। ठीक है, आगे चलें। To a small sample of copper sulfate, a student adds aqueous sodium hydroxide drop by drop until it is in excess. Describe what would be observed. जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं तो लाइट ब्लू प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। ये जस्ट ब्लू प्रेसिपिटेट्स, लाइट ब्लू precipitates are formed। ठीक है, और उसने क्या कहा है? until it is in excess, तो आप लिखोगे precipitates remains insoluble। precipitates remains insoluble in excess NaOH। The student repeats the experiment but add aqueous ammonia instead of aqueous sodium hydroxide। Describe what you would observe। Dark blue precipitates on excess addition precipitates dissolve to give a dark blue solution। To give a dark blue solution। उसके बाद है आपके पास कॉपर 1 क्लोराइड। Copper 1 chloride decomposes to form CuCl2 and copper। Construct the equation for this। तो बेटा ये है CuCl, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ CuCl2 में, एंड कॉपर में। कितने कॉपर है यहाँ पर? 2। कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 2। इसलिए बेटा यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Nitrogen dioxide reacts with itself to make dinitrogen tetroxide in an exothermic reaction। Guys, exothermic reaction है। The reaction is investigated at 140 degrees Celsius in a sealed container। A dynamic equilibrium mixture is established। NO2 dark brown gas है, N2O4 colorless gas है। What is the meaning of the symbol? तो आप बोलिए reversible reaction। हमने आपको पढ़ाया था कि तमाम रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है? व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गिवन ऑफ इनटू द सराउंडिंग। इन विच हीट एनर्जी इज गिवन ऑफ इनटू द surrounding। Suggest why a sealed container must be used to establish an equilibrium so that कोई भी reactant या product जो है वो escape ना करे। So that reactants or product do not escape from the reaction flask। The
pressure of the equilibrium mixture is decreased, alert रहना, important बात है, pressure of the equilibrium mixture decreased, the temperature is kept at 140 degrees Celsius. Predict and explain what will happen to the color of the equilibrium mixture. तो आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, जब आप प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो N2O4 ज्यादा बनेगा, सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। सही है, ठीक है। ओ, वो डिक्रीज कह रहा है। So increase in pressure favors the equilibrium towards right hand side, decrease in pressure favors the equilibrium towards left hand side. तो डार्क ब्राउन कलर नजर आएगा, ठीक है। सो आप लिखिए यहाँ पर decreasing the pressure causes the stress in equilibrium to minimize this stress. Equilibrium favors towards left hand side because of more number of moles. Thus, dark brown gas color will dominate. ठीक है, the temperature of the equilibrium mixture increased. The pressure is kept constant. Predict and explain what will happen to the color of the equilibrium mixture. बेटा आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डार्क ब्राउन कलर डोमिनेट करेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन increasing the temperature causes a stress in equilibrium. To minimize this stress, equilibrium favors towards left hand side, hence dark brown color will dominate. Nitrogen dioxide reacts with water to make nitric acid and nitrous acid. Nitric acid is a strong acid and nitrous acid is a weak acid. Describe an experiment to distinguish between separate solution of a strong acid and a weak acid. बेटा इसमें बहुत सारे हैं। आप क्या करें,
take two solutions with the same concentration. So जो concentration आपने नाइट्रिक एसिड के लिए एग्जैक्टली वही कंसंट्रेशन आप नाइट्रस एसिड की भी लिए, फिर आप क्या करेंगे, प्लेस pH मीटर in both the solution. ठीक है, a strong acid shows lower pH, weak acid shows higher pH. Nitrogen dioxide reacts with aqueous potassium hydroxide. Give the formula of each of the two salts formed in this reaction. एक बनेगा पोटेशियम नाइट्राइट और एक बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट. इसमें बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं. आप इसमें एक रिएक्टिव मेटल को भी यूज करके रिएक्शन करवा सकते हैं दोनों एसिड से. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वहां पर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन ऑफ वेरी क्विकली एंड मोर अमाउंट ऑफ गैस इज कलेक्टेड. जो वीक एसिड होगा उसमें लेस अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड एंड अमाउंट ऑफ गैस गिवन ऑफ वेरी स्लोली. ये सारी बात लिख सकते हैं आप, बट मैंने ये लिखा है क्योंकि ये सबसे आसान है. सबसे आसान क्या पीएच मीटर डिप कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको क्या है मामला. सही है, लेकिन मैंने नोट्स में करवाया आपको, मैंने आपको दो तीन तरीकों से करवाया. मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू भी करवाया है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को डिटरमिन करना. मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू भी डिटरमिन करवाना सिखाया है, तो आप वो भी लिख सकते हैं. सही है, लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं. जो मैंने लिखवाया है क्लास में वो यूनिवर्सल इंडिकेटर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट है. ठीक है, methane, ethane and propane are all gases at room temperature. State the use of methane. Methane किस लिए यूज होती है भाई? हाँ, मीथेन किस लिए यूज होती है? घर में खाना बनता है, फ्यूल होगा. Describe one source of methane in the atmosphere. Decomposing organic matter. State one possible environmental consequence of the presence of methane in the atmosphere causes global warming. क्योंकि ग्रीन हाउस गैस होती है. Ethane reacts with chlorine in the presence of ultraviolet light to give a number of compounds. 1 gram sample of one of these compounds contain 0.040 gram of hydrogen, 0.242 gram of carbon and 0.718 gram of chlorine. Calculate the empirical formula of this compound. ठीक है, so हमारे पास कार्बन कितना है 0.242, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 0.040 और क्लोरीन कितना है हमारे पास 0.718. इसको डिवाइड कर दीजिए 35.5 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 से, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, सॉरी 12 से. बताइए, ये तो 0.040 हो जाएगा. 0.242 डिवाइडेड बाय 12 इज गोइंग टू बी ये भी 0.02 और ये भी 0.02. इसको डिवाइड कर दीजिए 0.02 से, लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाएगा. ये कितना हो जाएगा 2.
2 और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा CH, the relative molecular mass of compound is 99. Did you of the compound? empirical formula आपके पास क्या है इसकी वर्किंग आपको CH2Cl taken N equals to 9. आप क्या करें CH2Cl का relative formula mass निकालिए, तो CH2 हो जाएगा 14 plus 35.5 taken N equals to 99. बताइए 35.5 plus 14 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 49 equals to 90. तो यहां से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2. N की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर CH2Cl टेकन 2 कर दूं तो ये हो जाएगा C2H4Cl2 and it's going to be our molecular formula. What is mean by the term diffusion? तो diffusion तो बहुत आसान है, movement of molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration. To a region of lower concentration. Explain why propane diffuses faster at 100 degree Celsius than at 60 degree. जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, डिफ्यूजन ज्यादा, ठीक है, रैंडम मोशन ज्यादा। तो आप लिखिए पार्टिकल्स are moving faster at 100 degrees Celsius because particles have high kinetic energy. Explain why diffusion could be used to separate a mixture of methane and propane. बताइए दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट होगा, तो मैं उनको सेपरेट कर लूंगा बिकॉज बोथ the compounds have different molecular mass so both of them have different rate of diffusion. Thus methane move faster than butane. ठीक है जनाब, चलो भाई प्रोपेन कर लेते हैं मेरे बच्चे, प्रोपेन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The table shows some information about the homologous series of the unbranched alcohol. One of the characteristics of a homologous series is that it has a general formula. What is the general formula of the homologous series of unbranched alcohol? तो बेटा जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n + 1 dot OH. Predict the boiling point of hexanol
an alcohol with 6 carbon atom. So बेटा 138 से ज्यादा ही होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, सही है? तो आप कोई भी एक वैल्यू सजेस्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए कह रहा है ना वैल्यू, यू नीड टू प्रिडिक्ट द वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्सेनॉल। तो 138 से ज्यादा कोई वैल्यू सजेस्ट कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ एक्वस ग्लूकोज। यार ये मैंने पहले भी करवाया है और आप जानते हैं ग्लूकोज react with yeast at 37 degrees Celsius to 40 degrees Celsius temperature under anaerobic condition. Under anaerobic condition. Yeast will produce an enzyme called zymase, which increases the rate of reaction. And since glucose exists in aqueous state, which means distillation method is used to collect ethanol. Distillation method is used to collect ethanol. सर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Butanol reacts with ethanoic acid to make an ester. Name and draw the structure of this ester. तो ब्यूटानॉल और इथेनोइक एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ब्यूटाइल इथेनोएट बनता है। और ब्यूटाइल इथेनोएट का फॉर्मूला ये होगा CH3COO। ये इथेनोएट लिख दिया और ब्यूटाइल में 1 2 3 4 कार्बन एटम होंगे। तमाम कार्बन एटम्स को हाइड्रोजन की वैलेंसी से सेटिस्फाई करें लाइक दिस। Ethanol is a gas at 100 degrees Celsius. Describe the changes in the arrangement and movement of the molecules when ethanol is cooled from 100 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. जब टेम्परेचर कम करते हैं, lower the temperature, lowers the kinetic energy. जाहिर सी बात है जब आप kinetic energy कम करेंगे तो random motion of molecule slows down हो जाएगी। जिसकी वजह से मॉलिक्यूल कम क्लोज टुगेदर। As a result, molecules arranged in a regular manner okay, we are done with this paper.